Edward Thomas. Edward Thomas was born in 1878 and died in 1917. He was a poet and a critic. During most of his short career, he was condemned to writing books to order to make a living, but he always wrote with literary taste about poets and with feeling about nature. He was killed in the First World War. He left poems whose lyrical beauty and passion greatly enhanced his reputation. रोशनी बंद। इस पोइम में शायर ने नींद पर एक नए जाविये से रोशनी डाली है। उसके ख्याल में नींद एक घने जंगल की मानद है जहां आकर तमाम रोशनी खत्म हो जाती है। लोग मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इस जंगल तक पहुंचते हैं। उसके अलावा कोई चारा नहीं। आदमी सुबह से शाम तक काम करता है। हर आदमी समझता है कि मेरा रास्ता जुदा है, मगर शाम पड़ती है, सब थक जाते हैं तो नींद के जंगल का रास्ता इख्तियार करते हैं। आदमी पर नींद गालिब आ जाती है और वो सो जाता है। मोहब्बत, मायूसी, बुलंद अज़ाइम, खुशियाँ, गम सब नींद के सामने हथियार डाल देते हैं। नींद के लुत्फ के सामने सब मज़े ख़त्म हो जाते हैं। अजीम से अजीम काम भी इतनी खुशी मुहैया नहीं कर सकता जितना नींद करती है। अच्छी किताब और बिलव्ड के रुख ज़ेबा का दीदार आदमी को जागने पर मजबूर करते हैं। वो उनको छोड़ने को तैयार नहीं होता, मगर फिर उसे पता नहीं चलता कि कब नींद ने उसे आ लिया। नींद का जंगल घना और तय दर तय है। हर तरफ खामोशी का राज है। इंसान चाहे या ना चाहे उसे यहाँ पहुँचना पड़ता है। रोशनी अब उसके लिए ख़त्म हो जाती है और वो इत्मीनान से नींद की आगोश में चला जाता है। नज़्म पढ़कर ये एहसास होता है कि नींद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, वरना इंसान काम करते करते ज़िंदगी से बेजार हो जाते। लाइट्स आउट। I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, whoever straight or winding, soon or late, they cannot choose. Many a road track that since the dawn's first crack up to the forest brink deceived the travellers, suddenly now blurs and in they sink. Here love ends, despair, ambition ends, all pleasure and all trouble, although most sweet or bitter, here ends in sleep that is sweeter than tasks most noble. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone, I know not how. The tall forest towers, its cloudy foliage lowers ahead, shelf above shelf. Its silence I hear and obey, that I may lose my way and myself. Critical comments. The poem dwells on the power of sleep. After reading this poem, a sense of gratitude is aroused for the blessing of sleep. Except sleep, nothing can keep man away from his obsessive ideals and anxieties. Without it, man would have died with work. The title of the poem is metaphorical. Light represents active life, so lights out means the end of the activities of the day and beginning of sleep. The poet has used the metaphor of a thick, deep forest for sleep. It deepens the meaning of the poem. Sleep is an unconditional surrender to the deep unconscious self, to the unknown. It has an equalizing effect, all subject to its spellbinding power. The rich and the poor, the good and the evil. There is perhaps the idea of death. Sleep and death are, after all, closely related. The poem is rich in imagery. In the last stanza, silence has been personified.